Good evening, everyone. Thank you for joining. Good evening, guys. Hope I'm audible. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. So, guys, one good news that one of our candidates from EM15 has been placed at Ventura Securities. He just now sent me an offer letter. Three more candidates' interviews are there on Monday in Crisil. So we got a reference there. So interviews are there. So probably we will take an interviews of few students, mock interviews as we mentioned. We'll take a mock interviews of those two students probably. And Vidya ma'am would like to say something before we start the mock interviews. Ma'am, over to you. Good evening, everyone. I hope everybody is doing great. So we have arrived to the last day of the 5 days. So towards the end, we are going to do mock interviews. I'm going to do the HR round and sir is going to do the specialized finance round. All right. Now everybody knows, okay, there are some set patterns of HRs asking typical questions. Aapke typical questions, so you should script it. Yesterday, I've told you the strategy of how you can script your answers to the best output. Now, the typical questions are, tell me something about yourself, walk me through your CV. ये तो आपके बहुत अच्छे से prepared होने ही चाहिए, not in a parroted way, but in the most organic way. जैसे हम बात करते हैं वैसे. It should come very, very natural because it is about you और आपको learn करने की जरूरत नहीं है आपके खुद के बारे में. Second typical question is, tell me something about your strengths, tell me something about your weaknesses. Here, they want you to highlight all your logical thinking skills, your analytical skills, your time management skills. So don't say, I am very good, I'm a perfectionist. No. It is a very, very vast kind of a word to comprehend Yes, as can an you hear? examiner. Oh, ma'am, I think your voice got disconnected. Now we cannot hear. Can you hear me? We can hear you now. We can hear you now. Yes, yes. Yes. So I'm saying typical questions like your strengths, your weaknesses, tell me something about yourself, walk me through your CV. These are typical questions. Don't 200 make रुपए दो, कल मेरे को वापस दिया क्या देखो रोहन सर के पास. Yeah, I'm sorry. Go ahead. Okay. So weaknesses, highlight in your strengths, highlight all your verbs which you have done in your internships and your experiences. Highlight those. Don't say I'm a perfectionist. Yes, I need things on time. No, you are being too stern. Don't be rigid. So highlight your analogical skills, your analytical skills, your research skills as an analyst, your time management skills. These are your things which you should highlight as strengths. For example, simple, what is your strength? My strength is I can read as many company profiles as you give me because I'm a very rapid reader and I'm personally very interested in this forte. बहुत अच्छा आपका impact पड़ेगा. Yes. Similarly, when you go to the weaknesses, don't say I am bad with English or sometimes I have time management or I cannot deal. I have fear of talking in public. No. These are all red flags. Do not say this. Rather, आप ये बोलिए. Initially, I used to be a little hesitant in presenting financial reports to my intern, to my mentor or to my friends. But now I am overcoming that challenge and presenting the financial reports and taking critical feedback. So बहुत ही अच्छे से आपका weakness आपने highlight कर दिया कि ये मेरा weakness था, but I am work in progress towards it. Similarly, you can say, first, earlier I used to take, sir, I can just tell you one of my weaknesses. Earlier, I used to take a week to read a company profile, but nowadays I am utilizing my time and doing it as quickly as possible, and there is an improvement. My mentor has appreciated me for it. Simple. आपका strength ही आपका weakness होना चाहिए. Just try to camouflage it that ways. बाकी, after these cliche questions, they are going to ask you typical HR situational questions. They're going to put you in your finance situations and ask you questions, which again is going to talk volumes about your behavior. After that, the specialization questions, इसमें तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए. चलो, HR questions, we can understand you're a little intimidated, you're a little nervous sometimes, all allowed.
But your finance questions, they should be told very, very confidently because that is your subject. While answering these questions, don't give standalone answers. उन्होंने पूछ लिया what is NVP, you're telling the full form of NVP. No. Give examples. For example, इसका NVP ये होता है, इसका NVP वो होता है. This is NVP. You are expected to back up your answers with some statistics which you've read, with some news which you have read, with some proof which you have researched. So you cannot be giving standalone one word, one sentence answers. Not at all expected in your specialization round. So make sure that everything is backed up with an example, a real life situation, and be storytellers. You are not small kids. एक sentence का answer या one word का answer, yes and no's, please avoid. Every time you pick a question from the interviewer, say, thank you, ma'am, that's a good question. Sure, sir, that's a tough one. Sure, sir, I would just want to tell you something about myself. So always add these thank you or gratitude notifications. Okay, now we will see how much have you understood. Sir, we can start. You can just highlight the CV and we can pick some HR questions at the same time, your finance questions. Okay. Darshan, will you start Yes, sir. we'll start from you? Okay, so I will share your CV to ma'am. I will share share the screen. Yeah. All right, Darshan has a... Okay, Darshan. Sir, should I start? Yeah, ma'am, you start, then I will call. All right. Typical questions. I will not ask you typical questions, Darshan. Why did you choose finance? And what are your strengths and weaknesses? Apart from that, I'm going to pick a very important question and you will have to tell me. Okay? Okay. Okay, ma'am. All right. What would you do if you found an error in your financial report just before submitting? Okay. Thank you so much for asking that question. That typically happens when we are working in pressure environment or situations where we have like high deadlines. So what do we do? My first thing would be see the impact. If it's minimal, just correct it and send the corrected version. If not, then just talk to my seniors and give them a proper way. Ki I have made an error in the report, so please rectify that before sending to someone, because it could have a larger impact to sending to a particular client or an institutional or a fund manager. So that would be my answer. Thank you, ma'am. Ended with Thank a you, thank ma'am. you. And when Yeah. you pick that up from them, smile. Thank you, ma'am. Yes, That's a ma'am. good question. Oh, ma'am, that's a tough one. Please try to make it a little more interesting. Okay? All Yes, right. ma'am. Understood. Next question. Very interesting one. What would you do if your manager asks you to manipulate some financial data? Okay. That's a very tricky question. Darshan and everybody in the forum, please don't start your answers with okay and so. It is disgrace to the interviewer or the Understood. senior. So never ever start the answers with okay or so. Never. Sure. Sure is the safest. Sure ko leke aage badho. Replace your okays with sure. Sure, ma'am. Sure, sir. Yeah. Sure, ma'am. That is a very actually a manipulative and a personal and a professional conflict of interest question. So whether to manipulate the earnings or the model. So first I would refuse it. Why? Because I would consider the importance of ethics and moral. Where why would my senior is like telling to manipulate certain earnings? Because he has maybe certain interest in whatever he wants to do. But I have to look at the larger picture, and then I should refuse it, and that would be my answer. Thank you. But he forces you to do it because he's your senior and he But threatens you might lose your job. What would you do? well, in that case, then I would document the conversation. I would ask him to give it in the writing and report it to the higher officials that whatever you are saying, it should be done with a proper sound rational. And I will let him know that this is what I'm thinking. This is not the way it should be done. Why? Document all the reasons and the rationals and what he is thinking. And then therefore proceed with that. If he's threatening the worst case, and just refuse from the project and just let it drop off. Wonderful. Very nice. बहुत अच्छे से answer कर रहे हो. Very good. With the same confidence, you move ahead. Okay. All right. Yes, ma'am.
Describe a situation where you had to meet a deadline involving reports Yes, recently, and how did you handle that tight deadline? sure, ma'am. So during result seasons, the pressure and the deadline, the time deadline is very quick and very we have to submit the reports very quick because the results are declared across the markets and we have to submit before the other market opens, considering the different fund manager interest. So how did I cope up? First, I figure out what exactly are my strength and weakness. And the first thing first, we should be prepared because in hand we know that the results will be declared at a particular date. So we should be prepared with the monotonous and the mechanical work so that it should not get diluted with those unnecessary things and the time do get utilized with such things. And the second thing would be take help, delegate with the team of analysts where I'm not good at or I'm weak at a particular topic. And at the end, collaborate with the particular team and meet the deadline. So that would be the particular approach I would use. Wonderful. One last question. You have mentioned in your CV that at Preferred Square, you were you were doing offshore management consulting. Yes, ma'am. That's correct. What were the challenges you faced in this role? Sure. Sure. The challenges were quite different from what exactly I would imagine. The first thing would be the clients we were dealing were Saudi clients. So the people over there don't have exactly what kind of knowledge. The people don't are not familiar with the language barrier. So that would be the first case because communication itself was the first problem. Then if I have to explain the complex jargons or the financial terms or the consulting terms, then it would become more difficult. So there was not a proper middle person or a POC. So that was the most challenging thing I felt. No doubt they had all the resources and etc. in terms of money or the infrastructure. But the most important challenge I faced was the communication and lack of clear thoughts and ideas. Alright. दर्शन इसको बहुत ही आपने स्ट्रेच कर दिया सिंपल आपने Okay. बोला मैम देयर वर टू मेजर रीजंस आई एम Mhm. again and again repeating myself, please sequence your answers. जब भी आप 2 reasons, 1 reason, 5 reasons Mhm. बोलते हो, then the alertness comes. So आप बस 2 reasons Understood. बोले थे आपने, मैम, 2 major reasons. One was communication barrier because we were dealing with Saudi, and Hmm. अब ये मत बोलो कि they don't know the language. That goes very, Yeah. very negative, okay? Yes. Yes. So you Understood. have to say, ma'am, there was a major communication barrier as the clients were Saudi. So we had a little bit of communication barrier there. And the second was whatever it was. But it was not a major hurdle. I learned and go back to same that I learned. अब बताओ ना यहाँ पे क्या क्या किया. I learned to Hmm. conduct this. I built. So why is he asking you this question? Is not to hear complaints from you. वो तो Understood. पूछेगा challenges क्या थे तुम्हारे, challenges क्या थे तुम्हारे. They want to put you in a anxious situation. Hmm. Don't get Got into it, ma'am. situation. Always route back to the JD. Always route back to what you learned. Please circle back to what you've learned. All these two were the major hurdles. But ma'am, I had a lot of learning there. Positive. Take a positive circle और उनको बताओ मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है. हर क्वेश्चन में आपने यही ट्राई करना है. आपके जेडी पॉइंट्स उनको बताने हैं कि ये था सिचुएशन बट मैंने यहाँ पे ये जरूर सीखा. Understood, ma'am. Yes, I Yes. think that would be a right approach. Otherwise, your grammar is in place, your confidence is oozing out, right? Mhm. Body language को और थोड़ा submissive करो दर्शन, थोड़ा और submissive. Yes, Hmm. and when you say sure ma'am, sure sir, वो थोड़ा और politely आने दो. Okay, ma'am. I know you Understood. being a boy, it is a little difficult, but yes, try. Sure, ma'am. Definitely. Over to you, sir. Okay. Hi, Darshan, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm good, I'm good. So Darshan, I would like to know which role are we applying for? I'm applying for equity research roles, sell side roles. Okay, why so? Why do you prefer equity research? Well, that's a very interesting question, a typical question everyone asks. So I would have the first thing is I like curiosity, to be honest. I like to research each and everything what's happening around me. I have a natural like inbuilt curiosity where I just like to know what exactly is happening and what is the core reason behind that. So that would cover my research interest. Yeah, yes. I'm So if I can just intervene, Yeah, I'm good. सर को 2 क्वेश्चंस क्यों पूछने हैं आपसे?
The moment he asks which role have you applied, आपने शुरू यहाँ से करना है. Sir, I'm a very curious person. That's my natural tendency. I really want to know Yeah. more and more, and my हाँ. interest lies in this, and that is why. तो सर ने 2 questions क्यों पूछने हैं आपसे? Sure. Are you understanding? Please Yes. take an opportunity to over exaggerate yourself Understood. to win the interviewer's heart. Yeah, and Darshan, always keep it small. We are, see, as an analyst now, we are very time constrained. Yes. 10 सेकंड भी तुम मेरे बर्बाद करो ना तो मैं बोर हो जाऊंगा, आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा. Understood. So it should be समझ like गया. very precise. बीच में Yeah. रुक जाए चल जाएगा. You know how we do it. Conclusion बस एक हाँ. 2 paragraphs. That's it. Yeah, 10 second. 10-20 seconds max you answer any question in equity research interviews. उसके ऊपर तुम गए तो मुझे लगा हाँ तुम फेंक रहे हो, तो कुछ नहीं आता. Understood, sir. Got it. Yeah. So again, so why you want to get into equity research, Darshan? Yes, yeah, I'm naturally tended towards curiosity. So the first reason, and why equity research? Because it is an intersection of a particular proper with understanding of business model, financial model. So it sits at a proper right place and tracking companies because that would be the best in terms of when it comes to research that I feel. Okay, see now this was your likes that, see the question I am asking now, Huh. I am not HR, okay? I Mhm. don't expect this kind of answers from you because Okay. see when I say interest, why you want to get into equity research, so you should be, so what I am doing for that. Hmm. You are interested, I don't care, okay? Understood. Because I am hiring you, na? Huh. Interested, everyone is interested, they like market, they like reading annual reports, etc. etc. तुम क्या कर रहे हो? If you ask me my interest, I will say I want to be into IPL. Why? Because I watch movies. Sorry, I watch IPL. I watch IPL. I know there's a lot of money involved in IPL. You know, I like the bat. I like the ground. वो ऐसा बातें कर रहे हो तुम. Okay. समझ गया sir. Yes. So, got it. So I want to get into equity research, sir, because I have left. You can see like this. Actually, can say, sir, I'm more interested into equity research. As you can see, my interest from my CV. I was working at as an equity advisory in Preferred Square, but while working over there, I developed. I wanted to get into more into equity markets. This role was specifically into some deal making. I wanted to get into equity market, and now I'm doing an internship with RK Advisory just to prove myself to get into equity research. I am making research reports. I am making financial models. I am tracking the news on a daily basis. ये हो गया तुम्हारा interest. Okay. Understood, sir. This Yes. is your interest. What are you doing for that interest? Mhm. It is not about तुमको ये अच्छा लगता है, तुमको वो अच्छा लगता है. Because again, समझ sir, गया. I am not HR. Proof. विद्या Yes, मैम को शायद तुम विद्या मैम पूछते why equity research, तो भी तुमको यही बोलना है. HR है तो ऐसे you don't have to elaborate things. Because Understood, investment sir. banking is so much time constraint कि Mhm. तुमको interest है तो वो सबको ही interest है. You are not the only one who are interested. How Understood, do sir. you prove your interest? Okay, Yes, sir. got it. Yeah. So yeah, again, why do you want to get into equity research, Darshan? Well, thank you so much for asking that question. So since in my previous role, I was involved in part of an investment advisory and equity research, but that was not completely a core equity research firm. Core equity research role. I used to work around deal advisory, helping in private markets also. So I wanted particular exposure in public markets as an equity research. Why public markets? Because, and this was mostly in Saudi market. I wanted to have an interest and exposure towards Indian markets. So that's why I had that gap over there. So that I want to fulfill that and my future goals to align with that particular roles. So that would I prefer to. That answers your question about equity research. No. So that's what you can also add. So that's why, sir, I joined an internship with RK Advisory, Yes. where I'm working on few models and few Yes, reports. yes. So now I want to align this with my future goals. I want to become an equity analyst. That's it. That's Yes. why that's it. That's it. No further question asked. बस करना ही है. क्यों करना है, क्या करना है, बस करना है. Understood, sir. And Yes, you can see definitely. I'll add myself, sir. that. I have left my job. I have left my job to get to follow my dreams. So I'm doing Understood. all the necessary steps which is required. I'm learning modeling. I'm learning writing reports. I'm Mm. working under an analyst. I got an opportunity to. I got a good mentor. He's teaching us how to do research and all. तो बस यही है. समझ Okay. गया, sir. Mm. And one more thing, तुमने बोला public markets. So it depends on which interview you go. Okay, let's say Okay. MNC में Indian markets नहीं होते हैं, ठीक है? Basically. So अगर तुम वैसा बोलते हो तो I will say यार हम तो Indian markets में काम ही नहीं करते, तो फिर तुमको क्यों आना है? समझ Okay, गया, sir. तो be specific कि अगर कोई इंटरव्यूज को जा रहे हो तो इंडियन मार्केट्स नहीं है तो वो मत बोलना वहां पे, पब्लिक मार्केट्स बोल देना. I was interested into more into public markets. Okay. Understood, sir.
Yes. ओके तो वो सिर्फ याद रखना कि क्योंकि अभी एक इंटरव्यू है एक का, तो वो क्रिजल में, बट दैट इज नॉट इंडियन मार्केट्स, तो वहां Yes, पे sir. तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे इंडियन मार्केट्स में इंटरेस्ट है. Hmm. Okay. Yes, आई sir. एम वर्किंग ऑन इंडियन मार्केट, सो आई वर्क इक्विटी मार्केट्स इज अ बेटर वे टू से रादर देन इंडियन या पब्लिक. ओके Got it, sir. ओके fair, या He can अच्छा also सो mention how many reports he has made in RK Advisory. कितने पब्लिक आपने प्रोफाइल्स स्टडी किया है, कितने कंपनी प्रोफाइल्स बनाए हैं, Yeah, I फाइनेंशियल would mention that. Definitely. लेटर्स पब्लिश करे हैं. वो उसने अभी तक एक भी नहीं बनाया. नहीं सर, That's बनाए. it. Okay then. Okay, so let's continue with the interview. Okay, so Darshan, what are you doing in RK Advisory? Yes, sure. So currently I work as an intern in ARC Advisory, where my day looks like tracking the markets right from starting a reading newspaper and what exactly to track the newspaper and read the newsletters across hospitality, automobile, and FMCG, prepare financial आराम models, से आराम से आराम से आराम से, मेरे को समझना चाहिए कौन से सेक्टर्स है. हॉस्पिटैलिटी. hospitality, automobile, and FMCG. And Okay. I prepare sell side reports and financial models, track quarterly results, and update them to my mentor and the fund manager, Rishabh sir over there. तो सेल साइड रिपोर्ट्स क्यों बोला? सेल साइड रिपोर्ट्स यू डोंट नो. रिपोर्ट्स. Okay, Make reports is report. fine. Okay, Make reports. Okay. सेल साइड रिपोर्ट, हाँ वो भी तुम्हारे सीवी से निकाल दो. सेल साइड रिपोर्ट, वी आर नॉट अ सेल साइड फर्म, करेक्ट? okay, That will be a conflict that I'm in a buy side and why are we making sell side reports? understood, sir. Okay. So acha, again when you say something like that, track basically see now in your CV, I just see building models, sell side reports, tracking companies, and what you do then? This is the only task that you do? No. Then So I have to break it down exactly, like authored company profile across hospitality sectors, and yeah, build reports for the quarter 3, what you for the do, build hospitality, build company reports, build quarterly month. reports, listen to the conference calls. Why all Understood. those things are not written on your CV? तुम जो भी करते हो, make financial models from scratch. What I will say, look at a JD of any equity research company for job. Whenever you Okay. see equity research openings, look at their JD and try to write all those things on your CV. Understood, Arcade sir. was okay. Usually I tell students to do that, the same thing. Whatever you say, हम तो वो करते हैं, we do the same thing. But let's say तुमको कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकते हो. But वो चीजें होनी चाहिए because it helps your CV to get selected in the ATS. Okay, तो वो जो वर्ड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में वो तुम्हारे होने चाहिए तुम्हारे CV पे. Okay. ठीक है sir. Okay. So is the because your word built correct? Is the use of built 0 to 0 or made? I'm not नहीं, sure. Are you using in the right context? Built, we do use the language built, right, when it comes to financial models. प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर बिल्ड, ठीक है. बिल्डिंग इज फाइन. 0 to 1 फाइनेंशियल मॉडल, हम ये तो वैसे भी दिस एक्सपीरियंस. ओके, सो व्हाई इज लाइक दैट फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन ऐसा अलग अलग क्यों है? दर्शन तुम्हारे सीवी पे, वन सेकंड, लेट मी पॉइंट इट आउट. लाइक ये तुम एनालिस्ट थे बराबर? Yes, sir. So I think this is all part of your work, right? Yes, sir. So equity research advisory, financial modeling, valuation, deal advisor, इतना सब क्यों लिखा है? Because if I start asking you questions on this, because entire your CV, you are coming for an equity research role, and what I'm saying is which is not relevant to equity research. Understood. So इतनी सारी चीज क्यों लिखी है? और ऐसा जरूरत नहीं फाइनेंशियल मॉडलिंग ऐसा अलग से लिखने को. ऐसा लग रहा है कि तुम 3 अलग अलग जॉब कर रहे हो. Looks like that. Okay. Understood, sir. मतलब फर्स्ट इंप्रेशन हो जाए तुम 3 अलग अलग जॉब कर रहे हो. तो एक में ही आएगा सब. इसके नीचे व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट, एंड यहाँ पे तुम्हारा रोल, हाँ तुमने लिखा है बिजनेस एनालिस्ट. तो क्या करने के? इक्विटी रिसर्च, जो व्हाटएवर. मेक श्योर एवरीथिंग इज अलाइन विथ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली एंड वैल्यूएशन. लेट्स से प्राइवेट क्रेडिट डील एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड. डेवलप सेक्टर, हाँ ये ठीक है. डेवलप सेक्टर, एग्जीक्यूटेड कॉम्प्रिहेंसिव डील एनालिसिस फॉर पब्लिक ट्रांजैक्शन, दिस इज आल्सो फाइन. ये सब लास्ट में लिखो. फिर ये फाइनेंस, ये तो इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मॉडल फॉर प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस, अभी ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रेमवर्क कवरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंस सीवी, सॉरी फाइनेंस करिकुलम. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये सब तो करिकुलम के वर्ड्स होते हैं, ये सब नहीं डालना है. दिस इज, तो दिस पॉइंट यू शुड नॉट राइट.
Got it, sir. फिर prepared pitch book, yeah, this is prepared. So कैसे होता है, see when you write it, reports Hmm. and pitch books probably are word file, right? तुम word में करते हो, PPT में करते हो, तो वो Yes. एक साथ लिखो. एक्सेल के जो चीजें लिखते हैं वो एक साथ लिखो. ऐसा Got अलग it. अलग लिखते तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा तुम्हारे सीवी पे कि अरे लिखना क्या है मुझे, कि तुम करते क्या है. समझ तो गया. एक्सेल एक साथ लिखो यहाँ पे कि एक्सेल के तुमने क्या क्या किया, मैक्रोज यूज किया, पिच बुक यूज, सॉरी, मैक्रोज यूज किया, एडवांस एक्सेल फंक्शन यूज किया, फाइनेंशियल मॉडल बनाया, ऑल द थिंग्स Hmm. रिलेटेड टू एक्सेल ऑन वन पार्ट. फिर उसके बाद क्या किया, पिच बुक बनाया, रिपोर्ट राइटिंग किया, सेक्टर रिपोर्ट निकाला, दैट वाज द सेकंड पार्ट. बट दैट्स इट. उतना ही लिखो ये पूरे इसमें. एंड ठीक है मेक सर. श्योर आर का पूरा यहाँ पे 4-5 लाइंस कम से कम, मे बी वट एवर यू कैन टॉक अबाउट इट, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस. Definitely, sir. ओके. तो ये सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, बिकॉज इफ यू सेंड दिस काइंड ऑफ सीवी प्रोबेबली इवन इफ आई रेफर दे विल रिजेक्ट यू. Understood. समझ रहे हो. Hmm. मैं भी अगर तुमको रेफर करूँ ये सीवी किधर, तो दे विल रिजेक्ट, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो उसका तो एक्सपीरियंस इधर है, तो व्हाई यू वांट टू गेट इनटू इक्विटी रिसर्च. Hmm. ओके. ओके. Yes, सो sir. स्ट्रक्चर योर सीवी ना बेटर, सो दैट क्या देखने वाले को भी समझे कि क्वेश्चंस क्या पूछने हैं. Got it. ओके. मैंने क्या, मैंने देखा नहीं था, मैंने आई जस्ट सॉ इट नाउ, पर मैं जा रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमको पूछना क्या है, क्या क्या किया है तुमने. ओके. Sure. अच्छा. सो अगेन लेट्स मी गो ऑन टू द क्वेश्चन. हाँ, क्या करते हो, अच्छा, व्हाट डू यू ट्रैक इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर? हाउ मेनी कॉन्फ्रेंस कॉल हैव यू हर्ड? I've had around like 4 companies conference calls. डू यू And हैव अ रिपोर्ट ऑफ दैट? yes, sure. ओके. फाइन. ओके. no, आई वाज आस्किंग Hmm. ऑटोमोबाइल. so you see हॉस्पिटैलिटी एंड एफएमसीजी, सी दर्शन वी आर नॉट ट्रैकिंग एफएमसीजी. अगर कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने Hmm. तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम. हॉस्पिटैलिटी में कौन से स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं वो भी लिखना है बेसिकली एज अ फ्रेशर, कि वी आर फॉलोइंग दिस, वी आर फॉलोइंग द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, बट मेजरली वी आर फोकसिंग ऑन दिस 4 स्टॉक्स. क्यों है? बिकॉज पोर्टफोलियो में, एसआर के पोर्टफोलियो में इसके लिए हम ट्रैक कर रहे हैं. समझ गया. ओके. एंड ऑलवेज योर सीवी शुड बी लाइक वी आर इन्वेस्टमेंट, फाइंडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ये भी तुम्हारा होना चाहिए Okay. इन द हॉस्पिटैलिटी स्पेस एंड इन द एफएमसीजी स्पेस. अच्छा, जब तुम बोल रहे हो यू आर कवरिंग एफएमसीजी, तो हमारे पास कुछ प्रूफ करने के लिए है नहीं कि हम एफएमसीजी कवर कर रहे हैं. Understood. ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल सेक्टर वी आर फॉलोइंग, वी आर फॉलोइंग द ऑटोमोबाइल सेक्टर वेयर वी मेक मंथली अपडेट्स ऑन द कंपनीज. Hmm. अच्छा, जब ऑटोमोबाइल्स की भी बात करोगे तो एक बार ऐसे बोल दो कि वी आर कवरिंग ऑटो, वी आर जस्ट मेकिंग मंथली अपडेट्स फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर. अगर कवर बोलते हो सेक्टर, इफ यू आर कवरिंग द सेक्टर, तो यू शुड हैव फाइनेंशियल मॉडल्स फॉर दैट एंड रिपोर्ट्स. उसको कवरेज बोलते हैं. और Okay. एल्स जस्ट ट्रैकिंग ऑफ, उसको हम सॉफ्ट कवरेज बोलते हैं. सॉफ्ट कवरेज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड, ऐसे लिख सकते हैं, सॉफ्ट कवरेज ऑफ ऑटोमोबाइल एंड एफएमसीजी. Okay, sir. We Got are it. tracking hospitality sector and we have a soft coverage on automobile and FMCG sector. तो ऑटो में क्या करते हो? ऑटो में we make monthly reports. Hmm. Monthly, we publish monthly reports on. So we publish monthly reports and analyze all the 4 companies, top 5 companies in the industry. पर एफएमसीजी में भी कंपनीज का नाम लेके बात करोगे तो बेटर है, क्योंकि एफएमसीजी अगर मैं तुमको पूछ लिया तो पता है एचयूएल क्या करता है. फिर Got it, sir. हॉस्पिटल में बहुत पूछ लिया, Hmm. हाँ, बहुत हॉस्पिटल में पूछ लिया vague सैमी होगा. होटल्स क्या करता है, याद थोड़ी रहेगा तुमको क्या करता है. Understood. Right. So never give them a chance. Like you are saying that sir hospitality sector है, आपको जो पूछना है पूछ लो. Hmm. अभी हॉस्पिटलिटी में ये भी आता है तुम्हारे, आई विल से, Travel, वो food service, हॉस्पिटल्स भी आता है IRCTC. एक्चुअली. Yeah. हाँ, आईआरसीटीसी भी आती है, टूरिज्म भी आता है, इसमें बहुत कुछ आता है. हाँ, तो समझ हॉस्पिटलिटी गया. में क्या होटल्स ट्रैक कर रहे हैं, होटल में भी क्या, तो ये 5-6 होटल्स ट्रैक कर रहे हैं, उसमें भी विच स्पेसिफिक मिड कैप या लार्ज कैप सेगमेंट जो है वो दैट वी आर ट्रैकिंग. तो ऐसा तुम्हारा सीवी होना चाहिए. Got it, sir. समझ गया. अगर तुम ऐसा सीवी दो मुझे हॉस्पिटलिटी सेक्टर, मैं तो हाँ, कुछ भी पूछू फिर तुमको इसमें तो. समझ गया, sir. मैं करता हूँ ओके. इसको करेक्ट. Yes. got it. So make sure ये थोड़ा सीवी थोड़ा realign करो. That ठीक. will help. Okay. Yes. Fine. Okay. So because see, ideally I am not judging you now because तुम्हारे Yeah. पास कुछ है ही नहीं रिसर्च के लिए. Got it. Hmm. तुम्हारे सीवी पे ही मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा. Sure. And don't give them chance कि तुमको जो नहीं आता है वो भी तुमने लिखा है. Understood. Okay. Got it. Because I will say competitions बहुत होते हैं इसमें. You have hell lot of competition in this interviews. मतलब if you get a chance, अगर तुमने क्रैक नहीं किया तो probably you never know next time तुमको कब मिले. ऐसा है. समझ गया. It is okay to fail. It is okay to fail. See, it is not okay to not try and fail. Hmm. Not try and fail. Sorry. मतलब तुम ट्राई नहीं कर रहे हो, फेल हो गया. मतलब तुमने सब इंटरव्यू दे दिया, अच्छा हो गया,
someone else was better than you, agree. But तुम ही खराब हो, that is not acceptable. कि सर मैंने ही खराब इंटरव्यू दिया, वो that is not acceptable. They need to check कि यार ये लड़का जो आया था वो सच में अच्छा था, बट somehow दूसरा उसका क्वालिफिकेशन अच्छा है या बात अच्छा कर, that's totally fine. Got it. इंटरव्यूज के बाद कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि अरे मैंने बोला था फिर भी क्यों, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला इसके लिए फेल हुआ, Mhm. कि तो वो भी दिख रहा है तुम्हारे इस पे भी कुछ भी नहीं है तुम्हारे सीवी पे. ओके. Yes. Another piece of advice, Darshan. Yes. आपके technical rounds में they will not see how good English you speak. Yeah, They would want that's you to the use all your finance specialization words. आप कितना टेक्निकल बोलते हो, आप कितनी मेथडोलॉजी फॉलो करते हो, आप कितना सीक्वेंस फॉलो करते हो, आप कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. ऑलराइट. They yes, would yes. not want flowery language. HR, you can mesmerize the HR. You will be Mhm. through the HR round. But technical when it comes, you will have to the point, crisp answer ही देना पड़ेगा आपको. Sure, ma'am. Otherwise, Definitely. they'll walk all over you. Yes. All the best. So I think Niranjan is asking how can this be answered to be a fresher, and freshers from Niranjan, freshers first of all are not entertained into equity research role. It is very difficult to get, even you are a CA, CFA, MBA, and even from IIMs, it is very difficult to get into research roles as a fresher. You have to have an experience, you have to get an certifications, you should know modeling, you should have live projects to work on. Without that, even your highly qualified research roles or investment banking roles are very much difficult to crack if you don't have any experience. Freshers next to impossible. Means I have hardly seen any fresher being selected. And if it's a fresher, he might be like first attempt or a CA ranker, or maybe from tier 1 college already has some good technical skills and all. Also is difficult. Okay. So Mayan will go next. Mayan is going next. Yes, sure. Yeah. Okay. One second. Sorry, one second. Yeah, man, this is Mahen CV. Hello, Mahen. Good evening, ma'am. Good evening. How are you doing? Fine. Great, great. All right. So you are an intern at RK Advisory and you are learning equity research. All right. Yeah. How do you feel when you are mentored by someone? Okay. Uh, sure. Thank you for the question, ma'am. Ah, Actually, as a fresher, I realized that directly getting into equity research is very much like next to impossible, because though we have technical knowledge about all finance knowledge that I have learned in CA, but when it comes to executing it for purpose of research, we fail there miserably. So working under guidance of a person who already has been an analyst for more than 8 years, it really helps a lot. He actually, like, we work as an intern under him, and he guides how practically the work is done, so it gives the right path for the next career. Thank you. वंडरफुल आंसर. 10 on 10. इसमें एडिशन ये करो. अब मुझे बताओ आप क्या क्या करते हो वहां पे. यू आर आंसरिंग होल क्वेश्चन. मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर, व्हाट आर यू लर्निंग इन आरके. यू कैन जस्ट टेल. यू जस्ट टोल्ड दैट ही टेल्स अस द रियल लाइफ एप्लीकेशन. बताओ. ही मेक्स अस राइट न्यूज, attend morning calls, Mhm. we have evening sessions, we have company reports. I have read so many reports in so many months with him. तो take an opportunity to talk, exaggerate about it. दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. आप मुझे पहले ही एक होलसम आंसर दे दो. You are going very right. 10 on 10. You start from he makes us do real life implications. आगे बताइए. Okay. He makes us track daily news. We have morning calls daily in weeks during the week. So we track majorly. So we are tracking now hospitality sector, and we softly cover
automobiles and FMCG too. Mhm. So we majorly focus on news which impacts the hospitality sector, Mhm. and it gives us daily insights regarding how the sector can perform in next coming few quarters or possibly Mhm. years. Very good. So अभी it बोलो gives us an current. edge in real time market. Second thing is we make financial Very models good. on the companies which are predominant in this industry. For Mhm. example, Chalet Hotels, IHCL, Leela, Mhm. Venti. So Mhm. while doing models, we also realize that there are many things which balance sheet teaches us, like Mhm. how the in what particular stage of cycle how the company performs. So in coming years, so it helps us to understand how the current news will impact the financials, ultimately profit and then price. वंडरफुल टेक एन अपॉर्चुनिटी टू टेल कितने न्यूज़लेटर्स पब्लिश करें हैं, कितनी कंपनीज रिसर्च करी हैं, कितने कंपनी प्रोफाइल्स बनाए. टेक एन अपॉर्चुनिटी बताओ. मैंने Okay. आई हैव बीन विथ हिम फॉर 1.5 month and I have published 10 newsletters and I have studied 5 company. टेक एन अपॉर्चुनिटी. बोलो अपने बारे में, बताओ तुमने क्या किया है. Okay, ma'am, just a short question, like wouldn't it be too lengthy for a If simple you are call? talking substance, the HR wants to hear it all. Okay. The HR hates to ask small questions. So what are you doing? Acha, what are you learning there? Okay, when did you Mhm. join? What is he teaching you? So what is your outcome? He doesn't like to hear that. But if a candidate is talking all substance, from the starting you have narrated how it is difficult for a fresher to get a job, how the mentor helps, how RK is helping you Hmm. to do real life implementation. What is he helping? It is all so connected. I want to know more. ये कौन मेंटर है, इतना अच्छा पढ़ा रहा है. ओके वाह, ये भी सीख रहा है. फाइनेंशियल मॉडल भी बना रहे हैं, न्यूज़लेटर भी बना रहे हैं. तो इट इज गिविंग हिम इंटरेस्ट एंड ही विल नॉट स्टॉप यू अनलेस ही हैज अ क्वेश्चन. which company are you targeting? You said you're targeting hospitality industry. कौन सी कंपनी कर रहे हैं? Chalet Hotel, did you do it? Yes. Do you have the proof? Yes. What about the chalet? अगर किया है तो तुम you will be able to tell. Yes, no, maybe. HR अगर थोड़ा सा फाइनेंस ओरिएंटेड है, मेल है स्पेशली, तो ही विल आस्क यू, डू यू रेकमेंड इन्वेस्टिंग इन शैले? Are you getting my point? You are routing your own interview by telling all the positives you have done. Mm-hmm. That's all about it. Yes. And You ma'am, one more question. Like a problem which I encounter while speaking is, I know many points like which I could speak, but while speaking, sometimes I forget some points, or sometimes I'm not able to structure it properly. So it is difficult to deliver In fact, what I was I. just about to compliment. I don't know what you've done with your voice. मैंने आपको बोला था, work on your voice. There is a slight improvement. Your pace is absolutely right. Huh? The selection of words is also very nice. When you started structuring your answer, Hmm. I understood. थोड़ा काम हो रहा है, स्पीच पर थोड़ा काम हो रहा है, वॉइस पर थोड़ा काम हो रहा है. Mahen, you actually improved. So start mirroring. And about points which you forget, it is general tendency. We will not be able to recollect everything. But if you remember it, you just say, sorry, ma'am, can I tell you something which I've recollected? Yes. Okay, okay. That's allowed. Yeah. बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, और जितना आप Mm-hmm. उसको ऑर्गेनिक रखोगे उतना आपकी पर्सनालिटी अच्छे से दिखेगी सामने वाले को. ठीक है? Right, right. Right, Yes. that was a very nicely answered question, huh? For everybody, all general public also. Please, हर question आपकी strength जानना चाहता है. And circle back to the JD. Circle back to the JD. कोई भी question फालतू में नहीं पूछ रहे हैं वो. Your favorite hobby, you cannot say swimming. You cannot say swimming. It has to be reading financial articles. I am very much interested in listening to conference calls. I like to follow financial influencers. Are you understanding? वो पूछेगा who's your favorite financial, वो क्यों finance, वो क्यों favorite है. Then you dig into the same thing, finance. वो analysis अच्छा करता है, वो report अच्छा writing बताता है. What are you doing? You are swimming in your own specialization only. You're not getting out of context. All right. Mahen, second question is? Ma'am, one second, ma'am, I just want to add. Yes, sir. Ma'am, when you said you forget things while speaking, so I also forget. So how do I remember it? How does a day starts? We read news articles, newsletters. उसके बाद क्या करते हो तुम? Remember, खुद क्या करते हो? Report बनाते हो, model Yes. बनाते हो. बस तो I remember in this way. What we do, how does a day starts? We make newsletters.
then we follow the markets. We follow the hospitality sector. Hospitality में क्या करते हो? There is quarterly and there is yearly. Quarterly क्या करते हो? Quarterly reports बनाते हो, yearly financial models बनाते हो, and उसके बाद मॉडल बनाने के बाद तुम क्या करते हो? रिपोर्ट बनाते हो. This is a way. तो यहाँ पे भूलने के लिए चांसेस बहुत कम आ जाते हैं इफ यू रिमेम्बर इन दिस वे. ओके, ये फ्लो रिमेम्बर, फ्लो तुम क्या करते हो, रिमेम्बर द फ्लो, तुम ऑटोमेटिकली याद रहोगे कि तुम क्या करते हो. ओके, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर. जब मुझे कोई बड़ी चीज बोलनी होती है कि आई ट्रैक दिस मनी कंपनी, तो कंपनीज में क्या ट्रैक करता है? सो स्टार्ट न्यूज पढ़ते हैं, उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाते हैं, फिर ईयरली नंबर्स देखते हैं, ईयरली फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, रीड एनुअल. सो ईयरली व्हेन यू कम टू ईयरली इट इज रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, एंड देन उसके बाद यू मेक फाइनेंशियल मॉडल्स. हो गया, हो गया ना, सब आ गया तुम्हारा. Yes. Okay. Correct. This Sequencing is how I करो, remember. sequencing करो. Absolutely right, sir. Sequencing करो. Just sequencing will help you. Okay, second question for Mahen. Tell me a time when you had quickly learned a new financial concept or a new financial tool. Okay. Sure, ma'am. That's a tricky question. Like, could you give me a moment to recollect my thoughts? Okay. Yes. Now with his cute smile, any HR would melt down and say, yes, sure, take your moment. Okay. Thank you for the question, ma'am. There was an instance where I learned the operating leverage concept. Very good. Yes. So when I was working on my financial models, so while going through the profit figures, one thing I identified that a small change in percentage increase in sales, it drives the revenue by more percentage than the increase in revenue. Like if the revenue doubles, the profit quadruples. It becomes 4 times. So Okay. just out of curiosity, I went through YouTube videos and some fund managers podcast where they explain operating leverage, financial leverage, and combined leverage concept. So this thing taught me like where the money is made, how the money is made during the higher revenue cycles. Yes, thank you. Thank you. Wonderful. Very nicely articulated. The moment you picked up that financial concept, you were in. And very nice, you gave your own real life experience. Excellent. I'm liking the way you're structuring your answers. थोड़ा सा स्पीड बोलने का अगर बढ़ाएंगे तो अच्छा है. Darshan has to reduce speed. You have to increase speed by only 1 second. Yes, yes. Yes. Okay. Sir, Can I take another question or over to you? sir, Yeah, ma'am, you can. sorry to cut you. I have a doubt. जब पूछते हैं कि like what exactly is RK Advisory? Is it a buy side firm or what exactly it is? हम उस किस तरह से बोलना है exactly? I said it's a prop fund. I have my own fund that you invest. Where I invest, it's like an advisory firm. Advisory ना, तो नाम ही buy side होता है ना, दर्शन. It is advisory. Okay, understood. So we तो buy make side. reports. हाँ, make reports. Why we make reports? Because advisory firm में reports भी बनाते हैं. खुद का fund भी होता है ना, हम advise भी करते हैं. Understood. Okay, so that is why I have, strategically placed this in such a way that when you go out for recruiting, एक तो समझना चाहिए कि तुम सेल साइड में भी एलिजिबल एंड बाय साइड में भी एलिजिबल. समझ गए. तुम एडवाइस भी करते हैं, मेरा खुद का फंड भी है. ओके, सो ऑब्वियसली ऑन द बाय साइड एंड एडवाइजरी इज समवेयर बिटवीन बाय एंड सेल साइड. क्योंकि एडवाइजरी में यू आल्सो मेक रिपोर्ट बट यू आल्सो एडवाइस. व्हेन यू एडवाइस कैसे होगा? सेल से रिपोर्ट से ही होगा. ओके, ठीक है सर. बट सेल साइड स्पेसिफिकली ब्रोकिंग, हम ब्रोकिंग में नहीं है. Got it. So this I have done that strategically so that इंटरव्यू में बोलने का प्रॉब्लम ना. ठीक है Okay. सर. Ma'am, you wanted to ask, Mayank? Sir, do you want me to ask one more question or over to you? Okay, I will go. Okay, Okay, go ahead. okay. Mayank, okay. So what do you do with RK Advisory, man? Thank you for the question, sir. At RK Advisory, I am typically working as an intern under a fund manager, an analyst who has an experience of more than 8 years in equity research. So how my day starts is like
in at morning we read newspapers, make newsletters related to specific news on the specific sectors we are tracking. Then we present it to our fund manager or analyst under whom we are working. Then we also have weekend batches related to learning. So what we learn, we apply throughout the week. We make financial models, reports, quarterly reports, and do whatever the manager asks us to do during the week. And then we have some sir, sorry sir, can I mention interview preparation also? No, see, RK advisory, it says like a job. So job की तरह आंसर दो. वीकेंड Okay. ट्रेनिंग्स भी नहीं आने चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी नहीं आना चाहिए. तुम क्या करते हो? मंडे टू Okay. फ्राइडे. This your interview should be based on Monday to Friday, not on Saturday, Sundays. Okay, ठीक sir. है? Okay. So ये नहीं आना चाहिए. What you do is, see, you are a guy who is looking out for investment ideas. Hmm. You track and you are preparing investment ideas for the fund manager. Investment So usually this should be your process. So ये it should not be a course. Okay, अगर course बताओगे ना तो उसको समझ आएगा, अरे तुम कुछ नहीं कर रहे. Okay. Yeah, Fine. because we are here to proceed. The reason I have done all these things to have an experience. ना तुम्हारा experience बताना है, course नहीं बताना. Okay, course बताओगे तो reject हो जाओगे. Okay, sir. Okay, yeah. Go ahead. Okay, what do you do at RK Advisory, man? Thank you for the question, sir. So I work as an intern under RK Advisory. So how my day starts is like I read financial newspapers in the morning, prepare newsletters related to specific sectors I'm tracking, present it to my fund manager, and then also I try to generate investment ideas on the basis of daily news which I track, which the newsletters which I make. And then throughout the week, I work on financial models, reports, equity research reports, and generating investment ideas. That's the core thing I do at RK Advisory. ये 2 बार आया इन्वेस्टमेंट आइडियाज. फिर उसके बाद तुम दिन में बोला ना, तुम ऑटोमोबाइल के बारे में नहीं बात की, ऑटोमोबाइल करते हो, राइट? नो, you track automobile sectors where you make monthly updates on it, you listen to the conference calls, you read annual reports, you make quarterly updates, make financial statements, make financial models. ये सब किधर है? लिखा तो है तुमने, बोल क्यों नहीं रहे? Yes, yes. पता है तुमने अर्निंग एनालिसिस, फोरकास्टिंग, कंपनी प्रोफाइलिंग, इंडस्ट्री रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ, ये सब किधर है? ये सब क्यों नहीं बोला? सो इम्पोर्टेंट है. कर रहे हो तो ऊपर 2 बार इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हो? ऐसे ही. एंड यू सेड समथिंग दैट यू रीड न्यूज़पेपर्स एंड यू जनरेट इन्वेस्टमेंट. ये गलत है. रीडिंग न्यूज़पेपर्स से इन्वेस्टमेंट आइडियाज जनरेट नहीं होते. Reading newspapers helps you understand a company. Understand, yes. So we make financial model, we make reports, and our major aim is to generate new ideas for the. Our major aim is to generate. अगर तुम बोलोगे ना I generate new ideas, समझ में which new ideas you generated. फिर क्या बोलोगे? Yes. फिर अगर तुम एक एक्सपीरियंस के सामने बोलोगे यार generate ideas, then be prepared to answer those kind of questions. My level of questions. कि कंपनी क्या करती है, कब पढ़ा, कितने साल देखा, how many years you tracked. See, investment ideas are not given at very early stage. Okay, you help in preparing investment. Okay, Yes. I help the fund managers to have new investment ideas. तुम देते हो ऐसा मत बताना. Yes. So that's why कल के बताना तो session बताओ. में बोला था कि स्क्रिप्ट करो अपने आंसर्स, स्क्रिप्ट करो अपने आंसर्स. चाहिए तो चैट जीपीटी का हेल्प लो, लर्न करो अपने आंसर्स, ऑर्गेनिकली मिरर करो अपने आंसर्स, तो आप नहीं भूलोगे. बट इफ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हो. यू डिड नॉट, Ma'am, है this ना? is the first time I'm giving an interview. यस, यू डिड नॉट इवन फोरकास्ट कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एम आई राइट? मैंने थर्ड सेशन में बताया था. Take help Yes, from ma'am. ChatGPT. Ask what kind of questions can be asked to me. Script करो उसको. If you think you know will forget. Yes, yes, ma'am. मैं तो इसके लिए ना, अभी हम मॉर्निंग कॉल्स उसी के लिए करते हैं, जस्ट टू बी गुड एट टॉकिंग. तुम आते नहीं हो कॉल पे, ठीक है? इसके लिए अभी तक तुम्हारा इंग्लिश इतना फ्लुएंट नहीं है. Yes, sir. मानना आते पड़ेगा बड़ो तुम. बात करना थोड़ा अभी सर क्यों? स्टार्ट. करो ना बात, उसमें क्या है? गलत होगा तो ही तो सीखोगे ना.
और डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके बात करोगे तो क्या होगा, आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, ठीक है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा एक्सपेक्टेशन तुमसे ऑलरेडी 4-5 लेवल ऊपर ही होता है बाकी से, ऐसा है। सो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, योर कम्युनिकेशन शुडंट बी एन इशू, बट आई कैन सी कि तुम इतना फ्लुएंटली नहीं बात कर रहे हो, ऑब्वियसली, क्योंकि तुम आते नहीं हो कॉल पे, मुझे पता है, तुम आते हो बट कभी बोलते नहीं हो कॉल पे। तो जब तक तुम बात नहीं करोगे, फ्लुएंसी वोंट हेल्प। सी, आई एम, यू नो व्हाई आई एम अ प्रोफेसर, बिकॉज आई हैव टू स्पीक अ लॉट इन इक्विटी रिसर्च, दैट इज व्हाई आई ट्राई टू बिकम एन प्रोफेसर। द सेम थिंग इफ आई टेल इट टू माय कलीग, वो बाई साइड पे पूरा टाइम बाई, उसने कभी बात ही नहीं की किसी से, वो बोल ही नहीं सकता इतना टाइम, मेरा फ्रेंड ही है, वी हैव वर्क इन द सेम इंडस्ट्री, पर उसने कभी बात ही नहीं की क्लाइंट से। अभी ठीक है, उसका एक्सपीरियंस था तो उसको हो गया, बट it is very difficult, if you don't talk, now expressing yourself becomes very difficult into equity research. And equity research is all about expressing. तुम रोज का क्या करते हो? Because technical round, probably as a chartered accountant, you will be sound. T ratio क्या होता है, ROE क्या होता है, ROC क्या होता है, asset liability क्या होता है, you will be able to answer those questions. But the when it steps goes, ना एक step ऊपर जाओगे, तो you have your communications will help. तुम जो बार बार भूल रहे हो, it's because you are not talking. ऐसा है। मैं चीज कभी भूल भी जाता ना, मेरे पास और 10 चीजें होती बताने को कि अरे हाँ, ये 10 चीजें कुछ तो याद आ ही जाएगा मुझे, ऐसा है। एंड व्हेन यू राइट दिस, तो थोड़ा ना, मैं योर सीवी, आई थिंक दर्शन का सीवी देखो थोड़ा, इट लुक्स लिटिल ऑर्गेनाइज्ड। योर तुम्हारे सीवी में देयर इज सम प्रॉब्लम, आई थिंक द फॉन्ट इज अ प्रॉब्लम। एरियल यूज कर, सॉरी कैलिब्री यूज करना, कैलिब्री 10। हम देखो, हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो प्रॉब्लली कैसा है, देखो यहाँ पे इतना स्पेस क्यों छोड़ा है, वाइट स्पेस, इट शुड बी अप, यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तुमने ये जो लिखे है, सी व्हाई इट इज नॉट जस्टिफाइड, ऐसा सीवी नहीं रहेगा तो रिपोर्ट कैसा होगा तुम्हारा? तुमने किया है ना रिपोर्ट राइटिंग, कैसे होते हैं वो एकदम स्ट्रेट, इसका देखो, हाउ हाउ। दर्शन तुम्हारा भी नहीं है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, शुड बी स्ट्रेट अलाइन होना चाहिए ऐसा। एंड ये थोड़ा, आई थिंक इट लुक्स लिटिल क्रैम्प्ड अप, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों दिख रहा है, या मुझे ही दिख रहा है ऐसा, नहीं, इट इज क्रैम्प्ड अप, इट इज एक्चुअली क्रैम्प्ड अप। तो इसका देखो फॉन्ट 10 होना चाहिए, सॉरी 10, 10 और रादर 12 लुक्स गुड, सॉरी 10 लुक्स गुड, 10 और 11 मैक्स। यहाँ पे आई थिंक द फॉन्ट इज डिफरेंट, यहाँ पे फॉन्ट इज डिफरेंट ना, व्हाट आई कैन सी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर देखो यहाँ पे वापस इतना बड़ा गैप क्यों है, वाई इज देयर अ बिग गैप? ये लाइन जो है, वाई इट इज लिटिल लाइट, डार्क होनी चाहिए। लाइट देखो, इधर डार्क है, इधर लाइट है, इधर वापस डार्क हो गई है। अब ये सब मुझे क्यों दिख रहा है ना, बिकॉज मैंने बहुत से रिपोर्ट्स बनाए हैं। यू माइट नॉट रियलाइज दैट, बिकॉज मेरे भी ऐसे मिस्टेक्स पकड़े जाने थे जब मैं करने का। सो बिकॉज वो लुक, इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर एन आई। दर्शन का बॉस ओके, उसका उसका दिख गया था, आई थिंक इसने फॉन्ट 10 ही यूज किया, इट इज कैलिब्री, आई कैन सी दैट कि कैलिब्री फॉन्ट ही है, या शायद से कोई एरियल होगा। Thanks, दर्शन प्रॉब्ली Nirumani sir. कैलिब्री लुक्स गुड, ये एरियल होगा शायद से, कैलिब्री लुक्स गुड, Okay, sir. थिंक इट इज एरियल। ठीक है। Sir, sir, यस, हाँ दर्शन। sir, can we you have to add like RK Advisory LLP or something like that? नहीं, आरके एडवाइजरी है, एलएलपी नहीं है आरके एडवाइजरी, इट इज जस्ट अ प्रोप्राइटरी फंड। Okay, sir. Okay. Acha, so one more thing, see, I have not asked you questions is because supported analysts with data preparation, financial ratios, attractions, preparing financial models. See, again, तुम जो लिखते भी हो वो भी तुम्हारे how does a day go वैसे ही लिखना है, reading news articles, sector, फिर reading क्यों करते हो news articles to gather data and track a specific sector. Okay. Then what you do, track automobile companies or automobile numbers on a monthly basis, where you also make automobile reports for the top 4 companies, top 4-5 companies. Then uske baad you listen to the earning calls, make conference call highlights for a company, for specific sectors. जितने भी तुमने किए, तुम बोलो कि इतने सारे conference call पढ़े हैं मैंने companies के, you can write the name of the companies, इतने सारे conference calls पढ़े हैं. Then you have also messaged. उसके बाद you read annual reports, PPT, you go to the annual reports, PPT to make a financial model of the company. फिर you make a financial models of the company, build a model from scratch and help in analyze to get value for the, or sorry, help analyze help build a financial model to have investment ideas.
और टू पिच दिस फॉर अ इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो वो वैसा तुम्हारे इन्वेस्टमेंट आइडिया में होने चाहिए। सो गो एज पर द फ्लो ऑफ योर वर्क। ओके ऐसा किधर भी कुछ भी नहीं लिखना है। There's always a flow that you follow. Always. तो क्या जब तुम प्रेजेंट भी करोगे ना एचआर के सामने, तुमको पता है प्रेजेंट क्या कर। बिकॉज तुम जब विद्या मैम को प्रेजेंट, तुमने बीच में ये बोला, फिर वापस इतना इधर आए, वापस भी नीचे गए, या श्योर तो यस ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी अंडरस्टूड अ स्पेसिफिक। सुबह क्या करते हो एंड चैट जीपीटी को बोलो टू रीफ्रेम इट। मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ। और एल्स गो टू जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इक्विटी रिसर्च फर्म एंड वहां पे देखो जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए क्या होता है, तो वो उधर के उठा के वर्ड यहाँ पे डाल दो। ओके, ओके बोलो चैट जीपीटी को रीफ्रेम। ये जो है ऑडिट टैक्स में, आई विल सजेस्ट, ये तुम्हारा 2002, दिस इज आर्टिकलशिप ना। यस सर अच्छा इधर लिखा ना आर्टिकलशिप। अच्छा लिखा है, सॉरी। देखो अभी इधर आर्टिकलशिप लिखा है, इधर फुल टाइम लिखा है, ऐसा क्यों? सर कंपनी का नाम पहले, तो कंपनी का नाम पहले ही होता है ना, या फिर तुम्हारे इसका नाम, कंपनी हाउ यू से ऑडिट एंड टैक्स। सी आई विल टेल यू व्हाट, एज एन नो, एज अ एनालिस्ट और एज एन एक्सपीरियंस गाय, व्हाट आई सी इन योर सीवी इज, जब मैं पढ़ रहा हूँ कुछ चीजें आर्टिकलशिप, तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ ना एग्जाम्पल, तो फिर ऑडिट एंड टैक्स कहाँ पे आ गया? तो ये मैं समझ सकती तुम फुल टाइम है पार्ट टाइम है, यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा फुल टाइम। तो तुम मुझे जितना ज्यादा मेहनत करवा लगाओगे ना, उतना मेरा वैल्यू तुम्हारे लिए कम होता रहेगा। The things, if you make things easy for the for your recruiter or maybe the one you are interacting with, तुम्हारा वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाता है। फॉर्मेट है ना, एक बेसिक ही तो फॉर्मेट है। देखो तुमने आर्टिकलशिप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फुल टाइम लिखा है, क्योंकि मेरा ध्यान में नहीं गया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो जो भी था, वॉट एवर डूइंग, यू नो, अकाउंटिंग इंटर्न, जो भी तुम लिखते हो, और फिर यहाँ पे आर्टिकलशिप आता ना, यहाँ पे फुल टाइम है। ओके, और यू कैन से आर्टिकलशिप एट, और आर्टिकलशिप एज एन, जो भी तुम्हारा डेजिग्नेशन होगा वहाँ पे। बिकॉज आर्टिकलशिप तो इक्विटी रिसर्च में भी होती है। मुझे कैसे पता तुमने क्या किया? मीन्स यू आर टेलिंग मी सर आप ये रीड करो, क्योंकि यहाँ पे ना ऑडिट एंड टैक्स एसोसिएट, ठीक है, आई नो ऑडिट एंड टैक्स एसोसिएट, तो मुझे पता है तुम क्या करते होगे ऑडिट में। यहाँ पे क्या है वैसे ही बताओ। फिर वो जनरली हमको करना ही पड़ता है 3 साल का तो नहीं 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 नहीं, वो मेरे को पता है, तुम क्या करते हो वो बता ना। यहाँ व्हाट आई एम सेइंग इज आर्टिकलशिप शुड बी ऑन दिस साइड। तुम्हारा पोजीशन डेजिग्नेशन क्या था वहाँ पे? और सर आर्टिकल ही रहता है ऐसा अलग कुछ रहता नहीं तो डेजिग्नेशन आर्टिकल इन व्हाट आर्टिकल, हम कैसे बोलते हैं, इक्विटी रिसर्च इंटर्न, करेक्ट। मैं नहीं बोल रहा मत लिखो। यस तो टैक्स ऑडिट आर्टिकल या जो भी तुम लिखते हो, व्हाट इज इट, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिट या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो भी तुम लिख रहे हो, तुम्हारा पोजीशन जो भी था, राइट इट देयर सो दैट आई डोंट नीड टू। और आर्टिकलशिप इन अकाउंटिंग, ठीक है, और ऑडिटिंग, फेयर यस इनफ। यस सर यस सर वर्कड एज एन, और मे बी ऑडिटर, आर्टिकलशिप एज एन ऑडिटर। तो आई एम आस्किंग योर डेजिग्नेशन, क्या डेजिग्नेशन नहीं, जो भी आर्टिकल था काम क्या कर रहे थे। फिर ओके, टैक्स ऑडिट, एनालाइजिंग, अच्छा नाउ आई विल से ये सब ना, प्रिपेयर इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न, आई विल से रादर चेंज योर सीवी टू समथिंग व्हिच सेज दैट समथिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया। रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइजिंग लेजर, प्रिपेयरिंग फ्रॉम इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन रिलेटेड पार्ट। तो हमने जो भी यूज किया ना फाइनेंस में वर्ड्स, फाइनेंस स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट देखा, पीएनएल देखा, वो आप है ना ये करो, क्या बोलते हैं, ओके आई विल से रादर you will explain it something about the financial statement rather than income tax filing और ये सब disclosures and all। हाँ डिस्क्लोजर लिखो तो वो बोले कि एनुअल रिपोर्ट से हम डिस्क्लोजर देखने के, नोट्स टू अकाउंट्स देखने के, ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ने के, बेटर। तो एनुअल रिपोर्ट देखो, एनुअल रिपोर्ट में जितने भी चीजें आते हैं ना तुम्हारे जॉब से रिलेवेंट, वो लिख दो। जो भी हेडिंग्स होते हैं ना एनुअल रिपोर्ट्स के, पीडीएफ सॉरी तुम्हारे इंडेक्स, ट्राई टू राइट इट ओवर दैट। तो दैट मुझे लगता है कि चलो यार टैक्स एसोसिएट थे, बट तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हैं, तुमको पता है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लोस क्या होता है, तुमने कंपनीज के देखे हैं, तो दैट तुम्हारा ये रिसर्च इजी हो जाएगा। ओके फाइन, फाइन, फेयर इनफ। थैंक्स So make these changes probably यस and आई be, सेंड yeah, and be regular in the class so that I want your, you know, communication, because पता है आज क्या हुआ, I was referring to few students to CRISIL, all were CA, दो CA थे अपने बैच में, and एक was a CFA level 2। Now what happened, you know what the HR said, that Rishabh, you are referring me this candidates, first tell me who are good at modeling, what do you think, rate them। तो मैंने उसको रेट किया, okay, this three as per the numbers। उसके बाद she is asking that Rishabh now rate me based on the communication।
सो अभी इफ यू वर द सीए तो क्या करता मैं तुमको रेट फॉर इट. नाउ आई एम नॉट रेटिंग यू ऑन ए डिग्री. चलो एक सीए एक सीएफए लेवल 2 था, अब से सीए इज मच बेटर, मतलब हायर डिग्री देन लेवल 2. बट नाउ इफ हिज एजुकेशन हिज कम्युनिकेशन वाज बेटर ही विल बी प्रेफर्ड ओवर यू. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एचआर पूछते हैं मतलब रेफरेंस में कि कम्युनिकेशन क्या है, तुमको पता है क्या. फॉर इट. तो आया करो क्लास में, बात करो, सिर्फ बात करो, कुछ हाँ, भी ये करो, मैं कुछ भी प्रेजेंट करो. अटेंड तो करता हूँ डेली, बट वो थोड़ा ये सब तो प्रेजेंट बात भी करूंगा नेक्स्ट वीक से. Yes. करो, क्या फर्क पड़ता है. सी एवरीवन इज लर्निंग ओनली. उल्टा जो प्रेजेंट कर रहे हैं आधा है ना, मैं भी बोलूंगा जो लोग प्रेजेंट करते हैं ना, दे आर द वन हु हैव एक्चुअली गॉट, दे आर द वन हु हैव एक्चुअली बीन प्लेस्ड द फर्स्ट. जो जो लोग प्रेजेंट करते हैं ना, सबसे पहला वही प्लेस होता है, क्योंकि इंटरव्यू में जाके दे आर यू नो ऑलरेडी स्पीकिंग. तो उनको याद रखने की जरूरत नहीं, बोलते बोलना क्या इंटरव्यू में. दे आर जस्ट टेक्निकल राउंड पे फोकस करते हैं लोग, ऐसा है. So ये जो ओके. आते हैं ना क्लास में और बात नहीं करते, दे आर लर्निंग हाँ, ऑनलाइन, दे आर लर्निंग, सॉरी, स्विमिंग ऑनलाइन. लर्निंग ऑनलाइन. स्विमिंग सीख रहे हो तुम सारे हाँ, ऑनलाइन. कभी स्विमिंग ऑनलाइन. you will have to jump in the pool. Yes, ma'am. So you have to jump in the pool. मतलब अटेंडेंस के लिए आ रहे हो मुझे नहीं पता, सुनने के लिए आ रहे हो मुझे नहीं पता, बट जब तक आप लोग बात, that's why in my sessions also I keep telling switch on your cameras, look at each other, switch on your cameras. So take मैं an डरोगे तो they're giving you an opportunity. सी आई भी ऑलमोस्ट एवरी डे ऐसा कोई भी क्लासेस करता नहीं है, मैं रोज रहता हूँ ऑलमोस्ट. आई ट्राई टू बी अनलेस आई एम बिजी, तो मैं रहता ही हूँ कॉल पे. ऐसा तुमने बहुत रेयर देखा होगा कि मॉर्निंग कॉल्स कैंसिल हुआ है. मैं खुद कैंसिल नहीं करता, मुझे खुद अच्छा लगता है मॉर्निंग कॉल में आने को. पर एक बार मैं वीकेंड के सेशन कैंसिल करूँ बट मॉर्निंग कॉल कैंसिल ना करूँ मैं. आई एम लाइक दैट बिकॉज आई लाइक टू स्पीक, आई लाइक टू नो, याद चल रहा है मार्केट में, पता होना चाहिए क्या चल रहा है, एंड स्पीक आउट ना. तो दैट इवन आई गेट, आई अंडरस्टैंड समथिंग, यू अंडरस्टैंड समथिंग. स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना. तो आज भी था इंटरव्यू में, देखो मैंने क्या किया, आई एम फोकसिंग मोर ऑन योर कम्युनिकेशन. मैंने तुम्हारे जो कर रहे हैं उस पर फोकस ही नहीं किया. दर्शन यू हैड अ गुड कम्युनिकेशन, बट दर्शन का टेक्निकल राउंड, टेक्निकल वाज नॉट गुड, मतलब लिखा नहीं था. Hmm. ऐसा है. तो इट गोज हैंड इन हैंड, बोथ गोज हैंड इन हैंड. फर्स्ट इज योर टेक्निकल, सेकंड इज योर कम्युनिकेशन. उसमें एक भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो अदर पीपल आर वेटिंग फॉर योर रोल्स. ऐसा है. तुम देखोगे, मैंने जब इंटर्नशिप के डाला था तो 300 कमेंट्स आए थे मुझे फॉर इंटर्नशिप. सोचो किसको लूं मैं. 20 कॉलेज आर बिहाइंड मी, सर हमारे लिए इंटर्न, हमारा इंटर्न ले लो. अरे मेरे पास एक ही ओपनिंग है, कितने लोगों को लूं मैं. ऐसा है. कंपटीशन ही था ये. ओके. ओके गाइस, थिंक विल रैप अप फॉर योर. सो अदर्स ऑल्सो, दोज हु आर नॉट प्रेजेंटिंग इन द मॉर्निंग कॉल, प्लीज ट्राई टू प्रेजेंट. आते हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग आते तो हो रोज, बट प्रेजेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझेगा, एंड मुझे रेफरल देने में उतना ही प्रॉब्लम होगा. नॉन नेसेसरली कि तुम अच्छे कर रहे हो और जॉब किसी और को मिल रहा है. मतलब तुम देखते हो मैं कितने सारे लिंक्डइन पे डालता हूँ ना, जो जॉब में लिंक्डइन पे डालता हूँ ना गाइस, वो जॉब के लिए मुझे रेफरल नहीं मिलता. दैट इज व्हाई आई पुट इट ऑन लिंक्डइन. तो कितने लोग मुझे बोलते हैं सर मुझे रेफर करो, मतलब तुम अप्लाई करो, मेरा नाम मत लो. आई कैन नॉट रेफर यू बिकॉज आई डोंट नो यू. ऐसा मुझे बोलना पड़ता है. ठीक है. तो अयान, भरत, दर्पण, तुम भी आते हो बट बात नहीं करते हो मॉर्निंग में. नेहा, Yes, sir. प्रत्येक 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 राव. क्या. या शिवम, हाँ शिवम कुछ बोला. शिवम, यस I सर. have a question. Sir, like you said that morning call is about improving the communication. So can't we say that uh, through morning calls we get to know about a stock and we research about the products of the company? यस यस. थ्रू मॉर्निंग कॉल्स नहीं. तुम मॉर्निंग कॉल्स में क्या करते हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो और वो प्रेजेंट करते हो ना. तो मैंने दर्पण को बोला, इसको बोला ना मैं इनको, दैट वी रीड मॉर्निंग कॉल, सॉरी वी रीड न्यूज़पेपर्स एंड वी एनालाइज कंपनीज एंड देन वी गिव एन इन्वेस्टमेंट आइडियाज टू आवर फंड मैनेजर्स. वी हेल्प हिम प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज थ्रू न्यूज़पेपर्स. So how does the deal look like? We interact with in the morning call. We interact with the fund manager, present our views to him. तो ये हो गया मॉर्निंग कॉल. मॉर्निंग कॉल से नहीं आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने से आइडियाज आते हैं. मॉर्निंग कॉल से प्रेजेंट करते हैं. Okay, sir.
तो उसका क्या कहना होता है, वाई आई टेल यू टू डू दिस इज बिकॉज मॉर्निंग कॉल्स में, सो तुम करे फंड मैनेजर को पता है कि अच्छा इसको बात करने आता है, ये किसी के सामने बात कर, तुम जब बोलते हो कि मैं एक फंड मैनेजर के सामने बात करता हूँ, तो वो समझ जाएगा एक तो मैं बोगस हूँ या तुम बोगस हो। अगर तुम कुछ भी बात कर रहे हो तो वो समझेगा यार किसी किसी बोगस फंड मैनेजर के साथ था, इसको कुछ आता नहीं है, ऐसे बड़बड़ कर रहा है। पर तुमने देखा होगा कॉल्स पे हम कुछ भी बातें नहीं करते, और मैं भी तुमको कितने बार बोलता हूँ शिवम ये न्यूज़ क्यों लिया, वो न्यूज़ क्यों लिया, कुछ भी बात नहीं करनी होती है, यू हैव टू टॉक पॉइंट टू पॉइंट। ओके, इसके लिए Yes, sir. ओके या कनिष्का। Sir, I had a very general question since we are on this role as this equity analyst thing. I very clearly remember during my MBA phase, we did had a guest lecture or something. And regarding this role, there was a girl and the guy very clearly asked this question. If you are trying to aim in the role like equity research, do you yourself invest? If not, why don't you? And if you do, what is, how does your portfolio altogether look like? So on in my like Sorry, sorry Kaniष्ka, I lost you. Kaniष्ka, you there? Oh, I think we lost this connection. Okay, anyone else before we wrap up? Okay, let me answer her question. When she was saying that when this question is asked, do you invest on yourself? So yes, you should be there, sir. I invest it, but since I don't have proper guidance of investing, that is the reason I need to work under and need to get into equity research role to know how to invest and how to help the clients invest. So yeah, investment तो करना चाहिए खुद तो. So philosophy, okay, you don't understand the philosophy, so that is what we are learning. That is why I have joined, I'm working as an intern where we are learning the philosophy on how to invest in the stock. I invest, but I just look at the fundamentals of the company, whatever I feel. Basically, I just take few numbers, what I have learned in my college, high profit margins, high ROE companies, and I invest. This is like talking about basic investment. वो नहीं बोलना होता है टेक्निकली मेरे को टेक्निकली ब्रेकआउट लगा तो मैंने लिया, अभी बॉटम पे आया, सपोर्ट पे आया, वो सब नहीं बोलना होता है इंटरव्यूज में अबाउट द टेक्निकल राउंड्स. Okay, I think she is not available yet. Okay, guys, we'll wrap up for the day. I think this Sir, was the does last of the 5 days. Anyone? Yes, Anyone? sir. Sir, does this look fine now? मैंने आपको शेयर किया है just a snippet change करके. किसका सीवी का? हाँ सर. Okay. फॉर्म मैं देखूँ क्या बाद में दर्शन आराम से? ठीक है सर, नो वरीज. Okay. Okay. Omkar, yeah, which finance term we should prepare for interviews of equity research role and which sector we should track as a fresher? Sector to track as a fresher, ऐसा कुछ नहीं होता है which sector to track as a fresher, but basically if I want to answer this question in one line, sectors which are easy to understand and products that you use in that sector, in that company. Products, pricing, you should know. But if you know the product and the pricing, if you are using the product, better. ऐसे ही sectors track करो जिसमें products और products, competitors, pricing तुमको पता है. Okay. Anyone else, guys, before we wrap up? Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir, for having me here. And lot of mehnat has to go in. People, lot of mehnat. In the morning call also take an opportunity to talk. In the evening also take an opportunity to talk. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank See you, you sir. tomorrow. Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Good night, ma'am.